Hi student, myself Amol Pattevar. Now today we are going to start plant water relationship from NCERT. तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली बोर्ड से हमने देख चुके हैं, 12th बोर्ड की बुक से। अभी हम NCERT से देख रहे हैं। ये आज का भी लेक्चर बोर्ड और एंट्रेंस वाले दोनों ने अटेंड करना है, ठीक है। दोनों को ही ये अच्छे से समझेंगे क्योंकि टॉपिक भले ही कॉमन है बट कुछ चीज़ें NCERT में ज़्यादा क्लियरली दी है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड। तो हम कैसे करेंगे कि जैसे एक लेक्चर हमारा बोर्ड का होता है तो उसी टॉपिक पे दूसरा लेक्चर हम NCERT से देखेंगे, जिससे आपको दोनों साइड बाय साइड क्लियर होती रहेंगी चीज़ें, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब कुछ डिफरेंसेस रहे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट नीट के लिए ज़्यादा NCERT ही फॉलो करनी है। तो NCERT से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कौन सा, प्लांट वाटर रिलेशन। तो इसके पहले जैसे बोर्ड से हमने इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, देन वाटर पोटेंशियल, टर्जर प्रेशर वगैरह ये सब देख चुके थे। तो अभी हम यहाँ से NCERT से देखेंगे। देखो क्या बोला है, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मतलब हमारे सेल के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है, जो भी इंटरनल बॉडी एक्टिविटीज़ चल रही है, उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को होने के लिए वाटर का भी इसेंशियल है इन प्लांट एज वेल एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बिना वाटर के कोई भी सेल लिविंग नहीं रह सकता है। अगर उसको लिविंग रहना है, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू करनी है, तो उसको वाटर ये इसेंशियल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वाटर ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर वाटर नहीं रहा तो बहुत बार ऐसा होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। देन देखो क्या बोला है, इट प्रोवाइड मीडियम विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व। मतलब एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें कई सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व रहते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में आप देखते हो, साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स है, शुगर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, DNA, RNA, ऐसे कई सारी चीज़ें क्या रहेंगी साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी क्लियर रखेंगे सब लोग, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर। मतलब मेनली जितना प्रोटोप्लाज्म हम सेल में देखते हैं उसमें वाटर ही है, इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिजॉल्व, और जिस वाटर में अलग अलग मॉलिक्यूल क्या है, डिजॉल्व है, ठीक है। सेवरल पार्टिकल आर सस्पेंडेड, मतलब डिजॉल्व नहीं रहे तो बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, जैसे कि ऑर्गेनल्स वगैरह है। नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो कि अगर एक वाटर मेलॉन देखते हैं तो वाटर मेलॉन काफ़ी लार्ज साइज़ का रहता है, उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसका 92% जो है वाटर मेलॉन के वेट का वो सिर्फ वाटर रहता है। मतलब अगर वाटर मेलन आप लेते हो तो उस वाटर मेलन का जितना वेट है उसमें 92% वेट या 90% जो कंटेंट है वो सब क्या उसका वाटर है। देन हर्बेशियस प्लांट, जो छोटे हर्बेशियस प्लांट रहते हैं, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट मतलब जो हमारा हाइट तक ग्रो होंगे, 4 फीट 5 फीट, तो पी प्लांट वगैरह। तो हर्बेशियस प्लांट जो है ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज अ डायमीटर। मतलब उसका अगर वेट करते हैं तो उसका जो ड्राई वेट है, ड्राई मैटर का वेट है, वो सिर्फ 15% रहता है। मतलब बाकी का 85% वेट जो है वो वाटर का रहता है, समझ रहे। मतलब एक्चुअल अगर हम किसी हर्बेशियस प्लांट का वेट लेते हैं तो उसका ओवरऑल जो वेट रहेगा उसमें से सिर्फ 10 to 15% वेट उसका ड्राई मैटर का। ड्राई मैटर मतलब क्या, कि अगर हम पूरा वाटर निकाल लेते हैं उस प्लांट से, पूरा वाटर निकाल लेते हैं 100%, तो उसके बाद जो बचेगा ड्राई मैटर वो उसका वेट, तो वो तो सिर्फ 10 to 15% है। मतलब ओवरऑल वेट में उसका 85% वेट उसका किसका है, वाटर का है, समझे। ऑफकोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन प्लांट बॉडी वेरीज। जैसे कि वुडी पार्ट है उसमें काफ़ी रिलेटिव वेरी लिटिल वाटर रहेगा, सॉफ्ट पार्ट रहेगा तो उसमें मोस्टली वाटर कंटेंट करेंगे। जैसे सीड अपीयर टू बी ड्राई, तो सीड हमको भले ही ड्राई दिखता है बट स्टिल हैज़ वाटर, है ना, अदरवाइज वुड नॉट अलाइव एंड
रिस्प्रिंग, रिस्प्रिंग मतलब कि जब हम सीड सॉइल में लगाते हैं तो वो फिर से उस सीड्स का जर्मिनेशन होगा और उसमें से नए प्लांटलेट फॉर्म होते हैं। तो रिस्प्रिंग का मतलब क्या कि सॉइल में ऐड करने के बाद जो सीड है वो अपने आप जैसे जर्मिनेट होगा, वाटर अगर उसको मिला तो बिना वाटर के सीड जर्मिनेट भी नहीं होता है, बिना वाटर के सीड सर्वाइव भी नहीं हो सकते। काफ़ी लॉन्ग समय तक आप सीड को अगर स्टोरेज करते हो तो उसका जो बचा हुआ वाटर रहता है वो भी लॉस हो जाएगा, तो फिर सीड डेड हो जाएगा। बट भले ही आपको सीड, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि जो ड्राई दिखते हैं बट दैट सीड आर स्टिल लिविंग अलाइव, है ना। ऐसे नहीं कि वो सीड डेड हो गए। जब आप उस सीड को सॉइल में लगाओगे तो उस सीड से फिर से नया प्लांटलेट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एज इट अपीयर ड्राई, ठीक है, बट इट कंटेन सम वाटर, जनरली 10 to 13% वाटर वो सीड रिटेन करेंगे ही करेंगे। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट की अगर हम बात करें तो टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, but most of the water is lost to air through the evaporation from leaves by the process ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस सबको क्लियर है, मैंने बताया था। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द लीफ, थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बट उसका मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, बहुत ही कम वाटर उसकी यूटिलाइजेशन में आता है। देन जैसे कि अभी एक मैच्योर कॉर्न प्लांट अगर हम देखते हैं तो मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर अ डे। मतलब एक मैच्योर कॉर्न प्लांट अच्छे से जो ग्रो हो चुका है वो पर डे 3 लीटर वाटर यूज़ करेगा। आपको नीट के लिए सभी चीज़ों पे एमसीक्यू आएंगी, वाटरमेलन, हर्बेशियस प्लांट, कॉर्न प्लांट। तो उसके बारे में जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो अच्छे से एनसेट से पढ़ के ही रखना है। देन मस्टर्ड प्लांट की हम बात करें तो एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स। मतलब मान लो मस्टर्ड का जो प्लांट है, मस्टर्ड का जो प्लांट है वो मस्टर्ड प्लांट अगर 5 kg का है तो 5 kg का है तो वो 5 kg के इक्वल वाटर एब्जॉर्ब करेगा इन 5 आवर्स। मतलब उसका जितना भी वेट रहेगा उसके वेट के इक्वल वाटर वो 5 आवर्स में एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड फॉर वाटर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग वाटर ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब वाटर की इतनी डिमांड देखते हुए हमको ये सिंपल सी बात है ये समझना कि वाटर एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर वाटर नहीं मिला तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी ठीक से, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस हो जाएगी या अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इन बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचुरल एनवायरनमेंट। चाहे वो कोई भी एनवायरनमेंट रहे, एग्रीकल्चर रहे या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट रहे। समझ रहे हैं आप? देन नेक्स्ट टॉपिक अभी हमको देखना है वाटर पोटेंशियल। For substances and remove waste using these 3 methods of transport. The exchange of materials occurs between cells and their environment across the cell membrane. To make this exchange as efficient as possible, some organisms have evolved specialized exchange surfaces, like the alveoli in the lungs, or root hairs in plants, or the nephrons in kidneys. Depending upon what is being exchanged and which direction along the concentration gradient things are traveling will determine whether diffusion, osmosis, or active transport will be used. Let's start with diffusion. The lovely smells of the cake spread around the room by diffusion. Diffusion is the process in which particles spread out from each other. They move from high concentration, so right by the cake, to an area of low concentration, so everywhere else in the room. In diffusion, particles move down the concentration gradient until they are evenly distributed. For particles to move like this, they need to be a gas or particles of a dissolved substance. Diffusion is seen throughout nature and allows substances to pass into or out of cells across the cell membrane. But they must be dissolved and there must be a concentration gradient that they can move from high concentration to low concentration. Gas exchange in the lungs, so oxygen moving from the alveoli into the blood and carbon dioxide from the blood into the alveoli, are both great examples of diffusion. Carbon dioxide moving from the air into the leaves of plants also moves by diffusion, but it doesn't have to be a gas. How digested foods like amino acids move from the small intestine into the blood also moves by diffusion.
You can also have facilitated diffusion, where the movement is still down the concentration gradient, but special carrier proteins are required to enable the movement. Glucose and ions need carrier proteins to move across the membrane. Osmosis is very similar to diffusion, but just for water. It is the movement of water into or out of a cell. Again, it is the movement from a dilute solution, so high concentration of water molecules, down the concentration gradient to a more concentrated solution, so low concentration of water molecules. The water molecules move across a partially permeable membrane. Water molecules move at random, so some do go back across the membrane. But the overall net effect is that there is movement to the more concentrated side, or the side with less water, until equilibrium is reached, or until there is no net movement of water anymore. Osmosis out of a cell can cause big changes. Animal cells shrivel up, and in plant cells the membrane and cytoplasm shrink away from the cell wall, causing the cell to become flaccid. And if osmosis causes lots of movement of water into the cell, plant cells swell and become turgid. They have a strong cell wall which prevents them from bursting, whereas animal cells don't have a cell wall, and so they burst. The absorption of water by plant roots and the absorption of water in the small intestine and the colon all use osmosis. So we know all about the movement of gases and water. But what is active transport for? Watch part 2 to learn about active. First part of this video, we looked at diffusion for the movement of gases and osmosis for the movement of water. They were things that could easily move from a high concentration to a low concentration. That makes sense. So what is active transport for? Well, the clue is in the name, active. Work has to be done. Active transport moves molecules from a low concentration to a high concentration against the concentration gradient. This is the opposite of diffusion and osmosis, and because it is not the natural direction, energy is required to make it work. Active transport is carried out by protein carriers within the cell membrane, and they have a specific binding site for the exact molecules they are transporting. The substance binds to the protein carrier on the low concentration side, and using energy from respiration, the protein carrier releases the substance on the other side of the cell membrane, where it is already at a high concentration. See the difference between diffusion? No energy is needed because the molecules can just slide down the concentration gradient, whereas in active transport, they are joining the crowd, and so more effort is needed, hence the ATP. Active transport allows cells to absorb substances from very dilute solutions, such as root hair cells taking in mineral ions from the soil, and in kidneys, so we can hang on to the substances our body needs, such as glucose and sodium ions. Cells which carry out a lot of active transport often have lots of mitochondria to give them the energy they need. So from these two parts, you should know how cells take in substances and get rid of waste by diffusion, osmosis, and active transport. Just remember that for diffusion, the substance moves down the concentration gradient from a high concentration to a low concentration. Just think of a slide. You don't need any energy to go from high to low. It's easy. Whereas active transport is the opposite. The substance needs to move up the concentration gradient from low concentration to a high concentration. Think of climbing a ladder. You need energy to go from low down to high up. What are the ways in which transportation takes place? What is the difference between active and passive transport? The plasma membrane acts as a semi-permeable barrier between the cell and the extracellular environment. This permeability must be highly selective to ensure that the molecules such as glucose, amino acids, and lipids can easily enter the cell. The permeability must also ensure that the essential molecules and intermediates remain in the cell and that the waste compounds leave the cells. Thus, selective permeability of the plasma membrane allows the cell to maintain a constant internal environment for homeostasis. Transport across the membrane may be passive or active. It may occur via the phospholipids bilayer or by the help of specific integral membrane proteins called permeases or transport proteins. Passive transport
is the type of diffusion in which an ion or a molecule crossing a membrane moves down its electrochemical or concentration gradient. In passive transport, no metabolic energy is consumed. It is of three main types: osmosis, simple diffusion, and facilitated diffusion. The plasma membrane is permeable to water molecules. The to and fro movement of water molecules through the plasma membrane occurs due to differences in the concentration of the solutes on its either side. The process by which the water molecules pass through a membrane from a region of higher water concentration to the region of lower water concentration is called osmosis. The process in which the water molecules enter the cell is known as endosmosis, while the reverse process which involves the exit of water molecules from the cell is known as exosmosis. In plant cells, due to excessive exosmosis, the cytoplasm, along with the plasma membrane, shrinks away from the cell wall. This process is known as plasmolysis. Due to endosmosis and exosmosis, the water molecules come in or go out of the cell and cause a pressure known as hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure that is caused by the osmosis is known as osmotic pressure. The plasma membrane maintains a balance between the osmotic pressure of the intracellular and intercellular fluids. In simple diffusion, transport across the membrane takes place unaided. Molecules of gases such as oxygen and carbon dioxide and small molecules enter the cell by crossing the plasma membrane without the help of any permease. During simple diffusion, the small molecule in aqueous solution dissolves into the phospholipids bilayer, crosses it, and then dissolves into aqueous solution on the opposite side. There is little specificity to this process. The relative rate of diffusion of the molecule across the phospholipids bilayer will be proportional to the concentration gradient across the membrane. Facilitated diffusion is a special type of passive transport in which ions or molecules cross the membrane rapidly because specific permeases in the membrane facilitate their crossing. This diffusion does not require the metabolic energy, and it occurs only in the direction of the concentration gradient. Facilitated diffusion is characterized by the special features. Firstly, the rate of transport of the molecule across the membrane is far greater than would be expected from a simple diffusion. Secondly, this process is specific. Each facilitated diffusion protein or protein channel transports only a single species of ion or molecules. Lastly, there is maximum rate of transport. When the concentration gradient of molecules across the membrane is low, an increase in concentration gradient results in a corresponding increase in the rate of transport. Active transport is a movement of any substance through the cell membrane that requires energy and is always against the concentration gradient, that is, from low concentration to high concentration. In the process of active transport, the solute particles move against their chemical concentration or electrochemical gradient. Some membrane proteins act as carrier molecule and transport the substrate to the other side of the membrane. When the molecules or ions move through the plasma membrane from low concentration to high concentration, they require energy for such movement. This required energy is provided by adenosine triphosphate, or ATP. ATP is produced by oxidative phosphorylation in the mitochondria. The active transport of molecules occurs in nerve cells and kidney cells.
During active transport, materials are transported against a concentration gradient. Active transport is very rapid and is usually unidirectional. It can be affected by cold, cyanide, and absence of oxygen. A specific protein acts as a carrier for each molecule or ion of a substrate. At one side of the membrane, the carrier molecule bears its binding site. On binding with the substrate molecule, the carrier goes on conformational change. This helps in transporting the carrier-bound substrate to the other side of the membrane, where it is freed in an unchanged state. Thus, the substrate molecules travel across the membrane, leaving the carrier molecule in the membrane. This transportation needs energy, which is supplied by ATP. In the process of supplying energy, ATP is converted into ADP. There are sodium-potassium exchange pumps in the membrane of many cells. It works against pressure of gravity. This is a mechanism for transferring sodium and potassium against their electrical gradients. For this process, energy is utilized from ATP in the same way. The protein involved in the pump is sodium and potassium dependent ATPase. For each molecule of ATP used, 3 ions of sodium are pumped out and 2 potassium ions are pumped in. The cell, therefore, maintains higher sodium concentration outside it than within. Sodium and potassium exchange pumps follow certain functions. The pump maintains a positive potential on the outer side of the membrane and relatively electronegative potential on the inner side. It creates resting potential in the nerve cells. The pump maintains water balance in living cells. It creates resting potential in the nerve cells. The pump maintains water balance in living cells and also helps in urine formation. It also takes part in the excretion of salt, as in the case of marine animals. Seagulls, penguins, and a few other marine animals drink sea water only to maintain the composition of their blood and cellular fluids, because they eliminate excess salt through the secretions of nasal glands, which causes a downfall in the concentration of salt in their body. The sodium pump present in the plasma membrane of the salt gland cells actively extrudes sodium, or Na, ions, which is accompanied by the chloride or Cl ions. Their nasal secretion contains 1.5 to 3 times more NaCl concentration than the blood. So to compensate this loss, marine animals drink seawater. The unsecreted and unmetabolized excess sodium present in the extracellular fluid have a tendency to pass back into the cells. Other substances combine with sodium ions and pass inwardly along with them, like glucose and amino acids in intestine. This phenomenon of combining of substances with sodium ions is called secondary active transport, whereas sodium-potassium exchange pump is called primary active transport. Apart from the sodium-potassium pump mentioned before, the other important pumps are called calcium ATPase pump and proton pump. Thus, we can say that passive transport does not involve the expenditure of energy by the cells, and it is a physical process, while active transport involves an expenditure of energy by the cells and is highly selective. Passive transport always occurs along the concentration gradient and does not allow the accumulation of substances in the interior cells, whereas active transport usually occurs against the concentration gradient and helps in the accumulation of substances in the cell. In passive transport, carrier proteins are not involved,
as it takes place either through the matrix or permeases of the membrane. While in active transport, carrier proteins are required since matrix or permeases of the membrane are not involved. Passive transport is bidirectional and slow. On the other hand, active transport is usually unidirectional and rapid. Decrease in temperature decreases active transport but does not affect passive transport. In passive transport, there is no effect of oxygen content and metabolic inhibitors on it, while active transport is reduced or stopped with a decrease in oxygen content. Metabolic inhibitors also stop active transport. Plant-water relation. Water is essential for all physiological activities of the plant and plays a very important role in all living organisms. Water is a main component of plant cells. Many plant functions depend upon the properties of water. Water constitutes 70% by weight in most forms of life. Watermelon has 92% of water. Most herbaceous plants have 10 to 15% of its fresh weight as dry weight. Carrot root is about 85% water by weight, and young leaves of lettuce contain 90% of water. Distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water, while other parts mostly contain water. A seed may appear dry, but still has water otherwise. It would not be alive. The physical and chemical properties of water make it suitable for a variety of purposes in plants. 1. It is a medium in which diffusion of solutes takes place in plant cells. 2. It is a solvent in which mineral nutrients enter into a plant from soil solution and transported throughout the plant in an aqueous medium. 3. It is a medium in which many biochemical reactions occur. 4. Water imparts turgidity to plant cells. 5. It provides mechanical support and rigidity to the plant cells. 6. Several movements of plant parts, such as folding of leaflets in sensitive plants, opening and closing of flowers, and stomata movements of leaves, are due to water. 7. Growth of plants due to elongation depends on water. 8. It is a source of O2 evolved in photosynthesis. 9. Water regulates heat in plant body. 10. Water is a medium for fertilization. It helps in dissemination of spores, fruits, and seeds. Terrestrial plants take up huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves, that is, transpiration. A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while a mustard plant absorbs water equally to its own weight in about 5 hours. Because of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. नाउ अभी जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ वाटर पोटेंशियल. टू comprehend plant water relation, an understanding of certain standard terms are necessary. ठीक है, like water potential, psi w is a concept of fundamental to understanding water movement.
आप यूँ समझ लो कि वाटर पोटेंशियल एक ऐसा टर्म है जिससे हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप और डिटेल में समझ सकते हैं। और वाटर पोटेंशियल का मीनिंग क्या, तो सिंपली वाटर मोमेंट, मतलब वाटर मूव होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल, या वाटर की मूव होने की जो टेंडेंसी है, वाटर का मूव होने का जो नेचर है उसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज psi s and psi p आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। मतलब एक फॉर्मूला है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये लास्ट में आप देख सकते हो psi w इक्वल टू psi s प्लस psi p। तो ये रिलेशनशिप है, मतलब वाटर पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो वन बाय वन हम देखेंगे व्हाट इज सॉलिड पोटेंशियल, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। द वाटर मॉलिक्यूल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मूव होते रहेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म। मतलब जब वो वेपर के फॉर्म में रहेंगे, गैशियस फॉर्म में, तब भी वाटर मॉलिक्यूल मूव होते रहेंगे, एंड लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तब भी मूव होते रहेंगे। एंड दे आर इन रैंडम मोशन, मतलब इरेगुलरली मूव होते रहेंगे, बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। मतलब वो जो रैंडम मोशन है वो कांस्टेंट भी है और काफ़ी रैपिड भी है। नाउ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। मतलब जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही वाटर का मोमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब उसमें सोल्यूट कम है, तो हम बोलेंगे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ये कंसेप्ट याद रखना कि जिस वाटर में सोल्यूट कम है तो हम बोलेंगे कि उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मान लो मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब दी है, दोनों में मैंने 10 ml वाटर आपको दिया है। मतलब पहले वाले टेस्ट ट्यूब में भी 10 ml वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर है। और सपोज़ एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब सपोज़ मैं उस टेस्ट ट्यूब को लेबल कर रहा हूँ ए, तो ए वाले टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर प्लस 10 ग्राम सॉल्ट है, और बी वाले टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर प्लस 2 ग्राम सॉल्ट है। तो अब मुझे बताओ, दोनों टेस्ट में तो 10 ml वाटर है, ए एज वेल एज बी, फिर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कौन से टेस्ट में ज़्यादा हो गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन बी टेस्ट ट्यूब, बिकॉज बी टेस्ट ट्यूब हैज़ लेस सॉलिड डिजॉल्व, दैट इज ओनली 2 ग्राम सॉल्ट। एंड कम वाटर पोटेंशियल किसका हो गया? ए वाले टेस्ट ट्यूब का, उसमें भी 10 ml वाटर ही था, फिर भी उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो क्यों है? क्योंकि उसमें 10 ग्राम सॉल्ट है, दैट इज सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जिस वाटर में कम, उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, और वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। एंड ऑब्वियस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। सो प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। तो ये याद रखना, प्योर वाटर है ना जिसमें कोई सॉलिड डिजॉल्व नहीं है, कोई आयन डिजॉल्व नहीं है, तो इट हैज़ ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो आगे, इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन अ कॉन्स्टेंट random movement of water molecule will result in a net movement of water molecule from a system of higher energy to one with lower energy। मतलब दो सिस्टम साइड बाय साइड रखी है तो वाटर कैसे मूव होगा? फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, मतलब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, और हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी मतलब क्या? पोटेंशियल, वाटर की मूव होने की टेंडेंसी। Now thus water will move from a system containing water at higher water potential, है ना, वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा? एक ऐसे सिस्टम जिसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, to the system one having lower water potential। This process of movement of substance to down the gradient of free energy is called as diffusion। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल के हिसाब से जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो भी एक तरह का क्या है? डिफ्यूजन है, जिसमें वो अपना ग्रेडियंट डाउन करने के लिए मूव हो रहा है। ग्रेडियंट मतलब जो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेडियंट। तो डिफरेंस कम करने के लिए मूव हो रहा है। तो वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल दैट इज साई। ठीक है, और उसका जो यूनिट है प्रेशर का एक्सप्रेस होने का वो रहेगा पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल। तो बाय कन्वेक्शन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल लेते हैं, बट कब? एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर। आपको ये ध्यान में रखना है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, बट कब बोलेंगे हम? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन एज अ ज़ीरो। तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। तो आज इतने देखते हैं, बाकी हम कल